general, a lot of women are working, in India, whether they are counted as employed in labor force survey, or maybe they are not counted as labor force, but a lot of them are anyway working, often, carrying out different income generating activities or even unpaid care work, and access to, I think, decent work for them has been a big challenge in India. तो हंस फाउंडेशन है, तो ये लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाता रहता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो महिलाएं हैं यहाँ की, उत्तराखंड की, तो उनको एम्पावरमेंट करना इनका पर्पज़ होता है। हैंडीक्राफ्ट के अंदर वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे वीविंग का यहाँ पे चलता है, कहीं पे कताई का भी चलता है, नीटिंग का भी चलता है, तो इस तरीके से हम देते रहते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारा फोकस है, यहाँ पे वूलन फैब्रिक का फोकस है, और इसके अलावा यहाँ पे जो लोकल एक फाइबर होता है दैट इज़ नोन एज नेटल फाइबर, तो जिसको बिच्छू घास भी बोलते, तो बिच्छू घास होती है, तो बिच्छू घास से हम यान बनाते हैं और फिर उससे कपड़ा बना के फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ की जो लोकल वूल भी होती है, एक जिसको बोलते हैं हर्षल वूल, तो उससे भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो लोकल के हो गए, बकाया हम इंपोर्ट भी करते हैं फाइबर्स। यहाँ पे हमारी जो वोमेन स्पिनर्स हैं वो उसको धागे को स्पन करती हैं, इसके बाद में फिर हम फैब्रिक बनाते हैं। Women are, I think, particularly in a more difficult position because of the social norms that influence a lot on what women can do and how they should be treated or what kind of jobs they should get, etc. फोर्स है मैडम, अकेले वुमेन फोर्स से काम चलता नहीं है। अब आउटडोर ड्यूटीज भी होती हैं, कभी कुछ मंगाना है, कभी किसी को छोड़ने जाना है, तो जो हमारे जो मेन फोर्स है तो उसके अंदर ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, और जो चेजर होते हैं जो मार्केट में जाते हैं वो हैं, और हम लोग भी हैं। अब नहीं चलता है काम, तो कुछ तो रखना पड़ता है। To begin with, I think a lot of women have limited access to employment opportunities because of the social norms. But then there are also problems of maybe limited availability of decent employment opportunities. अरे फिर मजबूरी है, हमारा घर का नजदीक है इसलिए हम पढ़ते हैं। Probably they cannot afford not to work, so they have to carry out some kind of income generating activities while they also manage unpaid care responsibilities at home, like looking after children, cooking, addressing basic needs of family members. So this situation leaves them with little option in terms of income generating opportunities. So they often find employment in jobs that are precarious but flexible. यहाँ भी आते हैं, मजबूरी से आते हैं ना, जहाँ से खर्चा है, बच्चे पलने हैं, ठीक है। सास से भी मना किया, सब मना करते, कहीं नहीं जाना, आदमी भी मना कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब सबको पता लग गया, हाँ ये जाती है, 2 पैसे कमाती है, मेरा भी हाथ अच्छा होता है, थोड़े पैसे मेरे भी बचेंगे, ऐसे करके दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, 2 बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना, घर की देख रेख, तो उसमें सब सपोर्ट होता है औरत का भी। बहुत अच्छे से घर चल रहा है, तो अब तो कोई मना ही नहीं करता। अब तो कभी भी हम कहीं जाते हैं, हाँ जाओ कहते हैं घर वाले, पहले से कह रहा था, फिर अब मना कोई नहीं करता। घर का काम बच्चों के दे के, बच्चों के हाथ मुँह दे के, उनको तैयार करके स्कूल को भेजते हैं, फिर हम भी आते हैं 8:45-9 बजे आते हैं बच्चे, फिर शाम को 6 बजे जाते हैं। When there are opportunities provided by NGO, maybe they would go for it because maybe there are no other opportunities. खुश हूँ मैं, इसलिए खुश हैं कि रोज़गार मिला है, आराम का काम है ना, कोई खेती का काम तो है नहीं, इसलिए हम खुश हैं। But when you look at also labor force survey data to understand people who are not part of the labor force, a lot of women who are outside of labor force, they raise kind of domestic duties as the main reason for not being in the labor force. So this shows that
really household responsibilities like unpaid care responsibility is a huge factor for affecting women in participating in labor force. हमारे घर वाले ने मना किया, नहीं जाना है, सास ने भी मना किया, फिर धीरे धीरे चलने लग गया, पैसे देखने लग गए, हाँ जाओ, फिर अब घर का काम करके भी आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, तो इसके बाद आप जाओ कह रहे हो, कोई कुछ नहीं करे। घरेलू काम, हमारी गाय है, भैंस है, हम सारा काम करते हैं घर जाके भी। फिर रात में जब सोते हैं ना, उसके बाद पता नहीं रहता कहाँ है तक, सारी रात की एक ही नींद आती है क्योंकि थक बहुत जाते हैं ना, हाथ पैर में दर्द वगैरह। ILO also carried out survey to understand kind of major challenges facing women who have paid jobs in India, and then work-family balance has been identified as the top challenge for women. So we see that unpaid care responsibility is a huge factor really affecting women in accessing jobs and remaining in jobs in India. बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो रोज़गार देते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो वो मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि वो लेडीज़ को दिया जाए, जिससे क्या है ना कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। मेंस तो कहीं पर भी जाके काम कर सकता है, और अकेला अगर मेंस करता है तो लोगों का खर्चा नहीं चलता है, तो मैन और वुमेन मतलब दोनों करते हैं, तो उनसे उनका गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। I think it's pretty common to kind of assume women as kind of supporting role because of the social norms. But then, of course, that is not a fair way to determine the wage for certain occupations. But that is pretty common. So as we can see, a lot of occupations that are carried out by women, the wage standards are often set lower. Maybe because of the notion that it's done by women and it's extension of kind of their natural ability. So it's not really proper work and they're doing. So that must be the underlying factor for determining wages that make wages low for jobs that are often done by women. यहाँ औरतों की ऐसा है ना, औरतों की मजबूरी है, औरतें ने अपनी परेशानी की वजह से आई है औरतें, आदमी इतने पैसे में कहाँ करेंगे, फिर जिसको मजबूरी हो कि वो ये करेंगे आदमी, औरतों को तो इतनी परेशानी है। अपना घर खुद चलाती है, इसलिए मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मैंने शादी भी नहीं की है, मैं अपने भाई के बच्चों को पालती हूँ और मैं यहाँ किराए पर रहती हूँ, मुझे किराया भी देखना होता है, मुझे अपने घर का बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई का 2-3 बच्चे हैं उनका भी देखना पड़ता है, तो थोड़ी यहाँ से हो जाता है, थोड़ी और कहीं मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, तो इसलिए मेरा चलता है। महंगाई तो काफ़ी है क्योंकि 80 से नीचे तो कोई सब्जी है नहीं ना, तो चलाते हैं, कोशिश करते हैं, कोई अच्छा खाएगा, हम कम अच्छा खाते हैं। तो स्टॉल था वो अगर हम अपने आउटलेट पे बेचेंगे तो ये 2600 रुपये का जाएगा। देखो जो हमारे आउटलेट्स हैं वहाँ पे हमारा खुद का ब्रांड चलता है, तो जो हमारा ब्रांड है हिमाद्री हंस हैंडलूम के नाम से, तो उससे चलता है, और बकाया जो उसके अलावा और जो ऑर्डर मिलते हैं तो वो कस्टमर का जो भी ब्रांड होता है तो उसके नाम से बिकता है। Understanding how products are produced is very important for companies, including big brands. So some companies they have carried out mapping to understand, how products are produced, including, the products produced by home-based workers. And some companies have made efforts to ensure that, these workers working at home, they are also made aware of important labor standards about no child labor, and then having access to minimum wage and trying to link them to social protection. But of course, not all companies are doing. It is important for all companies to make this effort to, trying to keep track of how products are made, even at the level of home-based workers, and promote good working conditions for these workers. कठिनाइयाँ ऐसी थी कि घर में बहुत मुश्किलें थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, और मैंने 300 में यहाँ काम शुरू किया था।
उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके हमारी तनख्वाह बढ़ी, तब 600 की। साथ वालों ने कहा कि इसकी तनख्वाह कम है, इससे फिर तनख्वाह बढ़ी तो हमने अपने काम पर भी पूरा ध्यान दिया, मेहनत भी की और लगन और परिश्रम से हम आगे को बढ़ते गए। Often these women workers, they are not in a position to negotiate the price, and maybe they also do not have the information to understand what would be the fair price for doing this kind of work. So it is important to raise awareness among these workers about calculating fair wages by understanding, okay, how long does it take to make this one product? And then if you work for, let's say 8 hours a day, like a full time, how many products they can make? And then they could also look at the minimum wage in the area to calculate, okay, so if you take 8 hours to make this one product, maybe that one product should be at least minimum wages. Like that, I think we need to raise awareness on how to calculate maybe fair wages, minimum wages based on hours they work and maybe skills required, etc. And then once they understand this, maybe they also need to come together among women workers to negotiate a fair wage with organization or people who are buying these products. कुछ लेडीज़ें यहाँ पर को बहुत अच्छी हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में बहुत कोशिश की और हर परिश्रम किया और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। उनमें बुनकर भी हैं, हेल्पर भी हैं और उन लोगों में बहुत आगे बढ़ाने की उन्होंने अपील की थी, इसलिए आगे बढ़ी। हाँ, महिलाएं जो है यहाँ पर बहुत परिश्रमी और मेहनती हैं और लगन और ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ती हैं। Generally, a lot of awareness raising needed on workers' rights, but also in addition to that, we need to really enhanced work on addressing unpaid care work in India, because this has been identified as a major barrier for women in accessing a labor market and in remaining in the labor force. And it's very important to also work towards creating an enabling environment for women in the world of work. So really addressing violence and harassment, including gender-based violence and harassment like sexual harassment, is very important because this is also a huge concern for women workers. And then this is a concern in general for many workers in India. And then once there are improvements in these areas, I think we can see improvements in terms of women's participation in labor market and women accessing better wages, and then women really seeing progress towards accessing decent work in India. समाज तो औरतों पर उंगली उठाता ही है, लेकिन ऐसा है कि स्त्री जो है आगे बढ़ेगी तो उससे सब कुछ बढ़िया रहेगा और पुरुष वर्ग जो है वो नज़र झुकाएगा और पुरुष के कंधे से कंधे मिला के भी चलेगी। बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ काम करके, लोगों को देख रहे हैं, लोग उसे बोलना सीख रहे हैं, लोग उसे हर चीज़ सीख रहे हैं। घर में तो वैसे ही बांधे रह जाते हैं।